संग सबरजीत सिंह तनख्वाह देते थे, महीने में 4,000 रुपए तनख्वाह देते थे और 3,000 रुपये उसको भत्ता मिलता था। वो जो जो ग्रेवियंस है वो इस 3,000 पर है, 4,000 पर नहीं है। 4,000 पे कैलकुलेट कर दिया जाए एज पर दी शेड्यूल गिवन इन द एक्ट इटसेल्फ। पैरा 13 कहाँ पढ़ रहे हैं आप? पैरा 13 अवार्ड इशू नंबर 3 में। तो वो पैरा 13 नहीं है अवार्ड का इशू नंबर 3। मैं दे दूं सर? नहीं मेरे पास है ना इसमें। वो रिकॉर्ड नहीं है बाबू साहब, रिकॉर्ड हो तो रिकॉर्ड। प्रार्थी ने अपने कथन में कहा है कि मृतक शरीफ को विपक्षी क्रमांक 1 तनख्वाह देते थे महीने में 4,000 रुपए, बस भत्ता मिलता था 7,000। ठीक है, शरीफ ने क्या कहा खड़े होकर? सरबजीत सिंह ने क्या कहा? सरबजीत सिंह एविडेंस क्या है? सरबजीत सिंह तो आए ही नहीं है, देख लीजिए। आपको बुलाना चाहिए था ना बताने के लिए कि कितना इसका ब्रेकअप क्या। 3,000 रुपए आप ट्रेवलिंग अलाउंस में देते थे कि सर वो प्रिजम्पशन में चला जाएगा। नहीं प्रिजम्पशन में नहीं जाएगा। नहीं यू हैव टू प्रूव। वो तो हमको प्रूफ इसलिए यू हैव टू प्रूव। हमने प्रूफ इसलिए नहीं किया कि देयर इज एडमिशन ऑन दैट क्वेश्चन। नहीं एडमिशन, बट एडमिशन इज you will have to prove that 3,000 will fall within the exemption which is provided, exception which is the exception which is provided in definition 2M. 2M says includes any privilege or benefit. उसके दो हिस्से हैं जी। includes, उसको जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे। एक मिनट सर जी, वो उसके दो हिस्से हैं। एक मिनट और सुन ले सर, फिर आप आगे। नहीं आदेश तो आपको मालूम पड़ी गया क्या होने वाला है। इसीलिए हम लोग बड़े आराम से रहते हैं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं होता हम लोगों के दिमाग में। Now let's see, wages includes any privilege or benefit. It includes any privilege or benefit is the salary, and the benefit which is capable being to be in estimated in money. Other than अब ये other than इसीलिए बार बार कह रहा हूँ सर, हत्ता इज नॉट देयर। बेजेज में उस सैलरी को ही उन्होंने इस तरह से डिफाइन एक्सप्लेन कर दिया है। उसकी डेफिनेशन ये डेफिनेशन थोड़ा सा पुरानी जरूर है, 1923 की बनाई। इन प्रिविलेज फिर उन्होंने लिख दिया बेनिफिट आर कैपेबल बीइंग एस्टिमेटेड इन मनी। वो तीनों जो ये तीन शब्द हैं, वो तीन शब्द जो डिस्क्लोज करेंगे उसमें भत्ता कहीं शब्द नहीं आ रहा है। जी। उसमें फिर उन्होंने कह दिया अदर देन ट्रेवलिंग अलाउंस और वैल्यू ऑफ एनी ट्रेवलिंग कंसेशन और कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर उसको 3,000 रुपये जो दे रहा है, ड्राइव सैलरी खुद कह रहे हैं वो, वेदर इट दिस भत्ता इज इंक्लूडेड इन फर्स्ट लिम और सेकेंड लिम। ठीक, इफ इट इज इन सेकेंड लिम देन आई एम द कोर्ट इन द कोर्ट। ठीक, इफ यू लॉर्डशिप होल्ड दैट नो इट इज इन फर्स्ट लिम देयर इज नथिंग। ठीक, लिखिए ये सर एक जजमेंट होगा। आप दे दीजिए, जजमेंट दे दीजिए। My lord, bhatta has always been a part of the salary, so I have one judgment on that of 2007. व्यू पुराना है सर, 98 का बॉम्बे हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का जजमेंट है, उसमें उन्होंने कर लो भत्ता इज नॉट इंक्लूडेड। This appeal is filed by the insurance company being aggrieved of the order dated 14/9/2011 passed by learned Commissioner for Workmen Compensation Labor Court Jabalpur in case number 100 of 2010 Fatals. Full stop. Next paragraph. Coordinate bench of this court had admitted this appeal on दीजिएगा मेमो ऑफ अपील दीजिएगा, इसमें तो स्कैन नहीं है। On 4/11/2011 in the following terms, namely within inverted comma, ऑर्डर ही दे देता हूँ। नहीं हो गया यहाँ पर है, whether the allowance paid
comma, would be included in the definition of wages as defined under Section 2 within bracket M bracket close of Workmen's Compensation Act, comma, 1923. Next paragraph. Shri Shukla, learned counsel for the appellant, inverted commas closed bracket, submits that definition of wages as given in Section 2 within bracket small m bracket close of the Employees Compensation Act 1923 is in two parts. Full stop. It includes any privilege or benefit which is capable of being estimated in money, but excludes a traveling allowance or the value of any traveling concession or a contribution paid by the employer of an employee towards any pension or provident fund, or a sum paid to an employee to cover any special expenses entailed on him by the nature of his employment. Next paragraph. Reading this definition, it is submitted that since in the evidence of the claimants it has come that claimant was getting 4,000 rupees as wages and 3,000 rupees as allowances, therefore that amount of 3,000 rupees by virtue of nature of engagement of the deceased as a driver is to be construed to be a traveling allowance and is required to be excluded from the purview of wages which are to be taken for the purposes of computation of compensation payable in favor of the claimants. Next paragraph. It is also submitted by Shri Shukla that 12% interest on the amount of compensation cannot be fastened on the insurance company, and it is for the employer to bear that liability. Next paragraph. Shri Chauhan, learned counsel for the claimant, supports impugned award and submits that he has filed a cross objection, but that cross objection now at this stage he would like to withdraw, and accordingly his prayer to withdraw cross objection is allowed. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, definition of wages as given in Section 2 within bracket M of the Employees Compensation Act, comma, 1923 is unambiguous. Full stop. Next paragraph. It includes all the privileges or benefits which are capable of being estimated in money, but excludes traveling allowance, etc. Full stop. In the present case, onus was on the insurance company to have examined the employer to extract exact nature of allowance which was payable in favor of the deceased employee. Full stop. If they could prove that rupees 3,000 were paid to the driver in the form of a traveling allowance, then yes, they would have been entitled for its deduction while making computation of compensation in favor of the claimants. Full stop. Next paragraph. However, admittedly, no evidence was led by the insurance company to prove the nature of the allowances, and therefore the Employees Compensation Act 1923 being a beneficial legislation, comma, presumption is to be drawn in favor of the claimants and not in favor of the employer or the insurance company. Full stop. Nothing. Next paragraph. Shri Shukla has though placed reliance on a judgment of Bombay High Court at Nagpur in Jubeda Bano and others versus the Divisional Controller, comma, Maharashtra State Road Transport Corporation, comma, Nagpur and others, 1990 LAB.I.C.1781 to buttress his claim, but this judgment has no application to the facts and circumstances of the case in as much as definition of wages as given in Section 2(1)(m) has two components, and admittedly onus is on the employer oblique insurer to
discharge that the allowances which have been mentioned by the claimants were in the form of second part of the definition, which will fall within the exclusion clause and not in the inclusion clause, full stop. Therefore, this judgment having no application to the facts and circumstances of the case is not applicable to the facts of the present case. Next para. Shri Chauhan at this stage has handed over decision of Supreme Court in Surekha versus Branch Manager National Insurance Company Limited to point out that allowances are to be construed to be one which are to be added towards the computation of compensation and they cannot be excluded. Full stop. Next para. Looking to the fact of that the definition is in two parts and wages include privileges or benefits capable of being estimated in money and only excludes traveling allowance or the value of traveling concession or contribution paid by the employer towards any pension or pension fund or a sum paid to an employee to cover any special expenses entailed on him by the nature of his employment, comma, in absence of any evidence to the contrary, allowance will be treated to be one falling in the definition of privilege or benefit capable of being estimated in money, and therefore the impugned judgment when tested cannot be said to be illegal or arbitrary. Therefore, the substantial question of law framed by a coordinate bench of this court is answered in the following terms, namely that unless and until specific evidence is led by the employer or the insurer covering the risk to the effect that the part of the allowance in whole or in part covered traveling allowance or contribution paid by the employer of the employee towards any pension or provident fund or to cover any special expenses entailed on him by the nature of his employment, comma, the perks which are given will be treated to be part of the wages, full stop. In above terms, the reference substantial question is answered, appeal fails and is dismissed. इंटरेस्ट तो जैसा अवार्ड में वैसा रहा है, पैसा तो पूरा जमा ही है। पूरे जमा नहीं, 5 लाख रुपए जमा है। नहीं पूरा जमा हो के 5 लाख, वो तो लाख है। एक्सेप्ट द इंटरेस्ट दे हैव डिपॉजिटेड एवरीथिंग। ठीक है, तो जब आपको एग्जीक्यूट करा लीजिएगा अवार्ड, पैसा तो पूरा जमा। सर इंटरेस्ट उन्होंने 1 महीने बाद ऑर्डर के दिया हुआ है, तो इन्होंने डिपॉजिट नहीं किया क्योंकि दे हैव डिपॉजिटेड अमाउंट इन टाइम। ठीक है, वो तो एग्जीक्यूशन में आप डिसाइड कराइएगा, यहाँ थोड़ा डिसाइड होगा वो जी। विदिन टाइम हम देंगे तो कहा दियो पैसा भी पूरा ऑर्डर है। बॉम्बे हाई कोर्ट कवर तो करता है बिल्कुल। My lord, this case is the cited case was the dealing with the different aspects, my lord. अच्छा। The legal question of law, my lord, is that they are entitled for continuation of the trial. Yes. We are not disputing that they are not एक बात entitled. सुनिए, LRs are. इंजर्ड को क्या क्या किस हेड में दिलाया, यहाँ से शुरू करते हैं। जी हाँ, बताइएगा। As it बताइएगा। there are 21 में है। हाँ, इस प्रकरण में में आई रीड एक मिनट।
para 21 of the award. Yes, पढ़िए please. इस प्रकरण में आवेदक की आयु 42 वर्ष एवं 8,000 रुपए प्रतिमाह वेतन निर्धारित हुआ है। अतः आवेदक को 8,000 रुपए से 60% राशि डिसेबिलिटी के 4,800 रुपए का 42 वर्ष की आयु में सुसंगत गुणांक 178.49 गुणा किए जाने पर क्षतिपूर्ति राशि 8,56,752। ठीक है. This appeal raises singular question that whether in case of death of the claimant during the pendency of the application under Workmen Compensation Act, any amount can be paid on account of disability sustained and computed by the learned commissioner for the workmen compensation, or he is only entitled to payment of loss of estate, or the legal heirs are entitled to only payment of loss of estate, etc. Full stop. Facts of this case are that this appeal is filed under Section 30 of the Workmen Compensation Act, being aggrieved of order dated 4/6/2022, passed by learned Commissioner under Workmen Compensation Act, Labor Code Khandwa, in case number 13/WC Act, NF, 2017, where insurance company is disputing payment of compensation, full stop. Next para. Brief facts of the case are that deceased was working in a ginning factory as a fitter, full stop, on 7/4/2017, when he was working, his left hand had come in the grip of the machine which is used for extraction of cotton, as a result of which his left hand was to be amputated, full stop. He sustained grievous injuries, full stop. Death कब हुई है? Sir, after the sir, exact date, I'm not, I can't take instructions with regard to exact date. क्यों? Why can't you take instructions? आपको तो मालूम होगा वकील साहब, डेथ कब हुई है? आप अपील में आए हैं. जी सर, डेथ इसमें कब? कहीं मेंशन नहीं है सर की अरे आपको तो मालूम. एलआरस कब सब्स्टिट्यूट हुए ये भी सर कहीं मेंशन नहीं है। दिखाइएगा, इसकी ऑर्डर शीट दिखाइएगा. ये है ना रिकॉर्ड, इसमें होगा ना. राधेश्याम मालवी
died on 5/5/2020 as per the death certificate issued by Municipality Khargone on 27/5/2020. Full stop. Thereafter, it is evident from the record that an application for setting aside the abatement and permitting substitution of legal heirs was filed on 13/1/2021, which was allowed by the learned Labour Court, and in terms of the said application, legal representatives have come on record. Full stop. Thus, it is evident that since date of death is 5/5/2020, deceased Radheshyam survived for about 3 years from the date of the accident. Next para. In that backdrop, it is to be examined that whether Radheshyam is legal heirs of Radheshyam are entitled to compensation as has been computed by learned Commissioner / Labour Court or not. Full stop. Next para. Shri Vaidya has placed reliance on the judgment of Jammu and Kashmir High Court in Sansar Chand versus Chandar Mohan and others 2010 SCC online J&K 294 equivalent citation 2011 ACJ 1236, whereas Sri Akshat Shukla, learned counsel for the claimants, has placed reliance on the judgment of Bombay High Court in Royal Sundaram Alliance Insurance Company Limited, Chennai versus Madhu alias Mahadev, son of Govind Rao Nevade, as reported in क्या लिखेंगे इसको? 2016 3 MHLJ 2016 MHLJ 2016 का 3 2016 3 MHLJ 3 MHLJ पेज नंबर uh, 102 to submit that even claim in case of death of an injured workman, his legal heirs are entitled to continue with the claim case. Next para. और इसके आगे मैं लिखा दूंगा. कुछ और लॉ मिले तो बता दीजिएगा. My lords, I want to make one more submission, sir. Sir, the judgment which was cited by my senior, sir, वो बता दिया आपको. it was with regard to Jammu and Kashmir motor vehicle rules, the Jammu and Kashmir motor vehicle rules, and the judgment which was cited by me is with regard to workman compensation. हाँ ठीक है चलिए. Sir, and my submission with regard to that all the facts were not raised before the employer cannot be raised in the appeal now. Next case. Taken up record. Oblige. My lord, pursuant to order passed by this honorable court, my lord, her complaint was investigated and it was found genuine, my lord. And respond number 5 has been issued charge sheet also. Okay. तो फिर अब क्या बचा है इसमें? So my lord, may allow me to withdraw this application for extension of time. ठीक है. Shri Vidya Prasad, learned counsel for the petitioner. Srimati Kanak Gairwar for the respondent. Srimati Kanak, next para. Srimati Kanak Gairwar fairly submits that an internal inquiry was conducted and respondent number 5 was found to be guilty. No, my lord. Yes, I'm sorry, my lord. A charge sheet has been issued to him. A matter is being investigated. Therefore, she prays for withdrawal of IA 5133/2023, an application for extension of time. Accordingly, application and petition both stands disposed of. Chali. I'm good. Serial number 31. Serial number 31. Murder in this case. Murder in this case, may kindly be in a week of time, murder. This case the related payment of wages act. No, murder, we have not having the book for payment of wages act.
सर उसमें जो ऑब्जेक्शन लिखा है लर्नेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने Rajesh Kumar Soni prays for a week's time to prepare the case on his request list after a week. Action letter. The number 126. The number 126. My lord, in compliance with order of this honorable court, my lord, dated 25/9/2023, the revenue authorities have demarcated the land of petitioner, my lord, last week. reply last date of my lord. They have let 4 hearing से यही हो रहा है सर. लास्ट सैटरडे को सर डिमार्केशन कर लिया. 20 डिसमिल जमीन अफेक्टेड है लॉट वहाँ जमीन वहाँ पे. दैट डिमार्केशन रिपोर्ट में भी कॉल्ड अपॉन my lord. इशू क्या है इसमें? Issue is my lord. डिमार्केशन हो गया. If you are not satisfied with the demarcation, उसकी अपील लगाइए. No, I'm satisfied my lord. फिर उसका खसरा क्या है? लॉट से 25/9/2023 को. अरे भाई उसके बाद बचता क्या है? जब डिमार्केशन हो गया. My land is affected in the road, my lord. Now I'm praying for compensation, my lord. You file a case for compensation. Under Article 300A of the Constitution, my lord, as well as I know 300A. You can move the authorities that in terms of the demarcation, your 0.20 acres of land is under the road, and therefore you be given compensation. You seek compensation. We'll direct the authorities to decide your application. no, my lord, the representation they have already decided. Arey bhai, They this are- was decided prior to demarcation. Prior Now- to demarcation. Now demarcation has taken place on Saturday. This is what you say. You say that in the demarcation, your 0.20 acres of land was found to be under road construction. This is what you said. Is it right? My lord, as per Kasra record, demarcation has yes. found correct. ठीक है. So in terms of the demarcation report, you will be free to move a fresh representation, which I'll direct them to decide through speaking order. My lord, it may be decided, my lord, because it may चलिए. be called, my lord. आप फाइल कर दीजिए डिमार्केशन रिपोर्ट. श्री, आपका शुभ नाम बताइएगा. My lord, I'm not having that demarcation. They have अरे भाई, जब आपकी जमीन का डिमार्केशन रिपोर्ट हुआ तो आपको तो मिलेगी. अभी दिए नहीं है सर. तो जब मिल जाएगी तब फाइल कर दीजिएगा. नाम बताइए आपका. आशीष पांडे, my lord. Ashish Pandey prays for and is granted 6 weeks time to file copy of demarcation report which has taken place on 9th December 2023. चलिए next case. The number 116. Kumar Tiwari. State. लास्ट 2 डेट से कोई नहीं है सर. None for the petitioner. Shri Jiten Srivastava for the state. By virtue of this petition, petitioner is claiming payment of compensation in lieu of land which is taken over by respondent number 2 and construction of road is started. Full stop. This compensation is sought under section 4 of the Land Acquisition Act. Full stop. It is pointed out that the act of the respondents is violative of Article 300 capital A of the Constitution of India. Full stop. This matter involves disputed question of facts as to when road was constructed, how much land of the petitioner has gone into road, etc. Therefore, petitioner will be free to move a representation to the respondent number 2 and 3 for demarcation of his land, and upon demarcation, if it is found that any land of the petitioner has come under the road constructed, then he will be free to move an application for compensation before the collector CD, who shall decide the same within 90 days of such said demarcation taking place. It is directed that demarcation be carried out within period of 30 days from the date of receipt of certified copy. This court has not expressed any opinion on the merits of the case.
Malord, I'm seeking indulgence in item 126, Malord. क्या करना है? Malord, आप कह रहे थे वो representation decide करने के लिए. नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी सुनेंगे इसको आराम से। 10-20 साल और चलाइए आप, नहीं, Malord, कर दीजिएगा वो उसमें 126 में, ठीक है। On the basis of the demarcation, petitioner will be entitled to move a fresh application to the competent authority claiming compensation, which competent authority shall decide within 90 days. Shall disposed of. obliged. Madam, on the last date of I am given to copy to Utkarsh Sharma. Today is the adjusted for seek instruction. आपका शुभ नाम बताइए? Ayush Gupta. Ayush Gupta submits that he had given copy of what? WP petition. Writ petition to Shri Utkarsh Agarwal, who usually appears for City Board. Today he is on adjustment. Looking to his adjustment case is adjourned. List next week. चलिए. Number 129. मतलब पिछली तारीख में रिजॉइंडर फाइल करने के लिए टाइम दिया गया था, मगर जिनका रिजॉइंडर फाइल करना है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट है उनके बड़े भाई का देहांत हो गया, तो वो एफिडेविट देने के लिए अवेलेबल नहीं थे मालूम, तो इसमें समझ खत्म हो गया, ये पिटीशन खत्म है। वो आपने पूछा लास्ट डेट पे लोकस पूछा था पिटीशनर का, आपका लोकस ही नहीं है, लिखिएगा। श्री, आपका शुभ नाम बताइए? इंद्र कुमार पटेल। इंद्र कुमार पटेल submits that there is that concerned person is not surviving to file rejoinder. Full stop. It appears that firstly petitioner has no locus to file this petition challenging the order dated 20/8/2009 passed by respondent number 1 in as much as it is not the parent teacher association which has any locus, and moreover no material is brought on record that said parent teacher association has continued to be in existence or to maintain this petition. Thus petition is dismissed as having been abated with passage of time. मालूम लेकिन Death of the president of the parent teacher association. चलिए। मालूम लेकिन सिमिलर केस है जो मेरा P18 है पेज 63 पे, इसमें भी मालूम पालक शिक्षा संघ ने ऑलरेडी ऐसे सिमिलर चैलेंज से पूछा था कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन आज भी जीवित है। मालूम कहाँ है वो रजिस्ट्रेशन, बताइए ना, आपने टाइम तो दिया था। मालूम इसमें रिजॉइंडर के साथ देना है ना वो। हाँ, तो क्यों नहीं दे पाए आप? मालूम वो रिजॉइंडर जिनका देना है मालूम जो रनु तिवारी द्विवेदी है वो अवेलेबल नहीं हो पाए क्योंकि उनके भाई का देहांत हो गया है मालूम। क्या कर सकते हैं? तो एफिडेविट उनका मालूम 2009 से तो आज हो गए 14 साल हो गए, अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई। नहीं, वो 10,000 रुपए की कॉस्ट पे टाइम दे देते हैं रिजॉइंडर फाइल करने के लिए। आपका ना लोकस है ना कुछ है, यू आर अननेसेसरी ड्रैगिंग दिस मैटर। और आपको टाइम चाहिए तो 10,000 रुपए की कॉस्ट पे दे देते हैं रिजॉइंडर फाइल करने के लिए। पूछ के आइए, बता दीजिएगा। जी मालूम। इसको तो फाइनली सुनना पड़ेगा मेरिट पर। प्लीडिंग्स आर कंप्लीट, केस इज टू बी हर्ड फाइनली। आपको सर 2 मिनट लगेगा सर। अच्छा सर, इसमें सर जो अपील स्टैट्यूटरी अपील है, हाँ। उसमें इन्होंने अपील फाइल की, लेकिन वो जो डिपॉजिट होता है दैट वाज नॉट डिपॉजिटेड ऑन दैट ग्राउंड दैट अपील वाज डिसमिस्ड। नाउ दैट ऑर्डर इज अंडर चैलेंज। बोल देते हैं कि ये डिपॉजिट कर दें और अपील को मेरिट पे डिसाइड कर दें। डिपॉजिट कर दिया था आप हाई कोर्ट में, जब कर दिया है आपने, तो अपील डिसाइड होगी पहले। अपील मेरिट पे डिसाइड करेंगे बोल देते हैं। It is submitted by the learned counsel for the parties jointly that this petition is filed being aggrieved of the order P17 passed by the competent appellate authority dismissing the appeal on the ground of non-deposit of statutory amount. Full stop. It submitted that since
merits of the appeal were not dealt with by the competent authority while passing order dated 21 August 2006 annexure P17, but subsequently mandatory statutory amount has been deposited by the petitioner. Matter can be relegated to the said authority to decide the appeal on its own merits within some prescribed period of time, that is 90 days from the date of receipt of certified copy of the ये order. तो फाइनल है ना, इसी से अपील डिसाइड हुई ना. ठीक है ना? चलिए, in above Appeal is appeal rejected. is disposed of. चलिए, petition is disposed of. Till then, they will not take any coercive action. Until decision on the appeal, no coercive action be taken against the petitioner. Obliged, sir. None for the petitioner. Petition is dismissed for want of prosecution. Stay, if any, shall stand vacated. Shall we? Number 132. Anil Kumar Gupta. Lordship, in this matter, we have already resigned from the Pur Kshetra. Yes. देखिएगा श्री आपका शुभ नाम उपेंद्र कुमार त्रिपाठी में उपेंद्र कुमार त्रिपाठी for the petitioner. It is informed by Shri Takmil Nasir that they have returned the briefs of पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड. नेक्स्ट कौन है यहाँ पर पूर्व क्षेत्र के कोई वकील साहब हैं क्या? Lordship, our letter has been received that Shri Rakesh Tiwari. Shri Rakesh Tiwari has been appointed in his place. Let name of Shri Rakesh Tiwari be reflected in the cause list for the respondents in the cause list next week. Highly obliged. Serial number 132. Serial number 132. None for the petitioner. By way of indulgence, case is adjourned. एक समय के पहले भी कोई आया नहीं है. Case is adjourned. List after 8 weeks. Serial number 164. Last letter. It's day before yesterday, the state has filed the response. I need some time, 10 days at least. Shri Avinash Jargar submits that day before yesterday, the state has filed reply he prays for and is granted 2 weeks time to file rejoinder. List after 2 weeks. Contempt भी चलाना है अभी खत्म हो गई contempt. Contempt मैंने नहीं फाइल किया है actually. अच्छा. महंत श्री ये आप ही का नाम आ रहा है. आपका ही है सर रहने दे साथ में नेक्स्ट क्योंकि मेरे पास कॉपी भी नहीं है उसकी. Okay. My lord, in this case, the petition challenging annexure P1 that is on page 12 to 19. In this case, my lord, there was a death case which is dismissed default and non-presence of the petitioner, even though on that day their case was fixed for evidence. So that after more than 13 years, she filed an application for under section 9, under order 9, rule 9, my lord. That is dismissed. It has not disputed that there is a time bar more than 2 years. Only submission is this, my lord. So far concerned, it's a death case. My humble submission is this. Can you direct to the trial court? It may be heard on merit without paying the interest till today. Only this thing, my lord. That has been dismissed on before this honorable court also. My lord, appeal has been dismissed on 10/9/2010 after 14 years.
The incident took place on my lords on. ठीक है, ये evidence lead करेंगे if they are able to prove the case. लिखिएगा श्री अभय गुप्ता for the petitioner. Petitioner is aggrieved of order dated 22/3/2010 नंबर passed by 2 के लिए Fourth Additional Motor Accident Claims Tribunal Sagar in MJC number 02/2009 on the ground that appeal has been claim has been dismissed for want of prosecution. Application for restoration 2 has been dismissed. Full stop. It is submitted that admittedly there was delay on the part of the claimants, but they being illiterate and there was no provision for limitation prior to 2019 amendment in the Motor Vehicle Act. 19 से 18 है, कब का amendment है? 2018 का है, 18 का लिमिटेशन नहीं है, 18 का है। 2019 amendment, which has been brought into effect with effect from 1/9/2019, matter impugned or award be set aside, matter be relegated to the tribunal to be adjudged on its own merits. Full stop. It is prayed. It is submitted that claimants will not claim any interest for the intervening period and will be entitled to interest only from the date of adjudication on merits of the claim petition. In view of such undertaking, prayer is not opposed by SHRI. Abhinav Tiwari. Abhinav Tiwari. Respondent number 5. Respondent number 5, Insurance Company. And Shri Patel for the Respondent Patel number 2. For respondent number 2. And accordingly, the impugned award is set aside. Matter is remitted to the tribunal to decide it afresh on its own merits. Above terms. Lordship, petitioner has expired. Lordship, I want to file an application for the substitute allotment. कब हुआ expire? 7/7/2023 को हुआ Lordship. Yesterday I have received the information. ठीक है, आपको मौका देंगे. Lordship. Shri. RS Seni, Lordship. RS Seni. Lordship. Prays for time to file an appropriate application for substitution of legal heirs of the petitioner. On his request, 2 weeks time is granted to do the needful list after 2 weeks. Lordship. Number 137. Sharma. There was a direction by your lordships to list this matter after disposal of WA. वो अभी मेमो गया नहीं है रजिस्ट्री से. This case is to be listed after disposal of writ appeal number. Writ appeal number 763 of 2008. 763/2008 and 794/2008. It appears that registry has not taken note of the earlier order and has listed this case without disposal of the aforesaid writ appeals. List this case only after disposal of the said writ appeals and writ appeals. Full stop. लॉर्डशिप इसमें 3 दिन का टाइम चाहिए था सर, वो कुछ अमेंडमेंट था इसमें. कर दीजिएगा, आप एप्लीकेशन लगा दीजिएगा, देखेंगे. नहीं, अमेंडमेंट अलाउ हो गया सर. अच्छा, श्री गौतम prays for and is granted 10 days time to carry out the amendment already allowed by this court. So they will supply the copy of and petitioner will supply amended copy of the petition to Shri Pillai, who may file additional reply within further period of 3 weeks. There is cost title, only cost title. जो भी करना है कर दीजिए. फाइल दीजिएगा जरा, तो ब्लैंक दिखा रहा है. Matter pertains to freedom fighter. हाँ. सम्मान निधि 2008 के रूल्स के हिसाब से बोले बंद हो गई डेट को.
None for the petitioner. Case is to be heard finally by way of intelligence. List this case in Part B of the cause list for final disposal at motion hearing stage. Serial number 139. May it please, my lord. My lord, this is an admitted writ petition. My lord, my land was acquired, 2.04 acres of it, for the purposes of construction of a sub-canal. Finally सुनना है ना इसको. Yes, if my lord. वो same order कर दीजिएगा इसमें. Correct. List in Part B of the cause list for final hearing as per its turn and seniority. Grateful, my lord. 40. None for the petitioner, none for the respondents. So respondent number 2 and 3. अच्छा श्री आपका शुभ नाम बताइए. So Sampat Kushwaha. हैं? Sampat Kushwaha. Shri Sampat Kushwaha for the respondents. Full stop. This petition is filed not challenging any order but a direction to the respondent number 2 and 3 to release a payment of rupees 5 lakhs from the final bills of the petitioner from full stop. Next paragraph. Shri Sampat Kushwaha submits that this case involves disputed facts of the case. Petitioner has an alternate statutory remedy of seeking recovery of his dues either under the provisions of the agreement or by filing a civil suit in this behalf. In the writ jurisdiction, no such direction can be issued in favor of the petitioner. Full stop. Accordingly, this petition can be disposed of with a liberty to the petitioner that if their payment is still due, they may file an appropriate proceeding for recovery of their dues from against the respondents. Our petition is disposed of. Serial number 181. ये महेश शुक्ला ये My lord, I am challenging the order in action Peter passed by the collector, my lord. It rejected the claim of the petitioner, saying that, my lord, you are not coming category of displaced person, therefore you are not entitled for that. इसका रेफरेंस कब लिया आपने? मतलब इसका रेफरेंस होता है ना? नहीं, इसमें रेफरेंस ए बेनिफिट ऑफ रिहेबिलिटेशन स्कीम के लिए, अच्छा, अवार्ड के लिए, फिर इसमें समय लगेगा. इतना pleadings are complete. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the cause list as per its turn and seniority. चलिए next case. serial number 142. प्रेम तिवारी There's two corrected matters, madam. 142 and 142.1. In this matter, madam, the matter filed in the 2011, but reply हो गए तो कॉलोनी सब बन गई. reply has yet not been filed. madam. ठीक है, रिप्लाई मत आने दीजिए, अभी तो कॉलोनी सब बन गई. बचा क्या है इसमें? है ना पिटिशनर आप है कि पिटिशनर नहीं, आपकी सर, मेरी है ना. सेकंड आपकी. अच्छा, दो हैं क्या? जी जी. एक में सर ये रिस्पोंडेंट है, उसमें एक पिटीशन इन्हें फाइल की. क्यों? हमारे मैटर में सर क्या हुआ है सर? तो कॉलोनी वगैरह सब बन गई सर बन गई. हमने इसमें कॉलोनी कंप्लीट करके उनको दे भी दिया, बट दे आर नॉट इशूइंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट. हु इज नॉट इशूइंग कंप्लीशन? ये कॉर्पोरेशन. उसमें सर सुनेंगे, लिखिएगा रूल 25 अपने. हाँ, तो कॉर्पोरेशन को बुलाते हैं ना, कॉर्पोरेशन को आने तो दीजिए. नहीं, कॉर्पोरेशन जवाब आ गया हमारे इसमें, वो कुछ भी नहीं कह रहे इस बारे में सर. ये तो उनका एफिडेविट, बेटर एफिडेविट फाइल करवाते हैं ना. हाँ, कर लिखिएगा. श्री जितेंद्र तिवारी फॉर द पिटीशनर. टेक ओवर करने के लिए रिकमेंडेशन है P2, P3 एंड P4. हाँ, 2009 का रिकमेंडेशन होगा. उसी पे तो एफिडेविट बुलवा रहे हैं भाई.
95 से लिख रहा है within 15 days they have to take for the petitioner. They submitted that colony was handed over to the Residents Welfare Association. Was to be handed over. Recommendation was made, but Municipal Corporation Bhopal has not taken any action in regard to handing over of the colony to the Resident Welfare Association. Full stop. Let affidavit of the Commissioner of Municipal Corporation Bhopal be filed in this behalf. That's why decision has not been taken within 2 weeks. List. In the week commencing 2nd January 2024. Number 143. Matter relates to seizure of vehicle मानो 2011 का ऑर्डर अभी कुछ बचा है क्या? गाड़ी सड़ गई होगी अब तो आपकी, क्या करना है? Render infractions but liberty if any action taken by the authority. To be fairly submits that the passage of time petition may have been rendered infructuous and prays for withdrawal of this petition with liberty to pursue remedy if any cause of action still survives. The aforesaid observation petition is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty. Obliged. Lordship and trade time next week, Lordship. क्या हो गया? प्रेजेंट जो पिटिशनर है 2011 में जिला पंचायत की प्रेसिडेंट थे जब ये पिटिशन लगाया गया था। क्या ऑर्डर क्या है? P6 का ऑर्डर क्या है? P3 सर। P3 पेज नंबर 21 में पंचायत फंड का यूज ये प्राइवेट महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत सड़क और नाली के उपयोग के लिए कर रहे हैं और जबकि वो फंड का आज आपका क्या लोकस है मैडम? वही बस मैं इसीलिए नेक्स्ट बताने तो हम ही बता देते हैं ना, इसका कोई लोकस ही नहीं है। अब हो गई, जो नई बॉडी आएगी वो करेगी अपना। हाँ। तो कब तक भाई यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स? नहीं, मैं प्रेजेंट बॉडी से बात कर क्या करेंगे प्रेजेंट बॉडी से? प्रेजेंट बॉडी को आना होता तो खुद आपसे संपर्क कर लेते। 2011 से 12 साल खत्म हो गए पूरे। सर 2 दिन हो, मैं नेक्स्ट वीक में कर दूंगी मंडे के लिए। कुछ नहीं होना है इसमें, हो गया, खत्म हो गया, उनकी टर्म भी खत्म हो गई प्रेजेंट बॉडी। हाँ, प्रेजेंट बॉडी की तो टर्म खत्म। अब अगली बॉडी देखेगी, देखिएगा। Miss C.V. Rao prays for withdrawal of this petition as it has been rendered infructuous with liberty to file fresh if the present Gram Panchayat, नहीं जिला Panchayat is of the opinion that any cause of action survives and they are required to agitate the same before the court. With the aforesaid liberty, petition is dismissed as withdrawn. 45 मैं समझ कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 लॉर्डशिप की ये कंपनी किसी और ने अडॉप्ट कर लिया हिंडाल्को, तो मेरे पार्टी लॉर्डशिप अडानी ने कर लिया, तो उनको पार्टी बना लें। अरे वो खुद आपके पास आएंगे? नहीं तो हम पिटिशनर है तो ये सर प्रेज फॉर टाइम टू इम्प्लीट correct parties who has taken over Hindalco plant. नहीं अडानी। आप सुना तो करिए, अडानी ने कौन सा लिया है प्लांट? SR plant they have taken, sir. SR, sorry, Hindalco नहीं, SR plant. Let necessary application be filed within 7 days peremptorily, failing which petition shall stand dismissed without reference to the court. Same ना। The matter of fishing right, my lord. 2010 में पट्टा दिया है, 2020 तक वो पूरा हो चुका, वो इन्फ्लेक्चुअस हो गई पिटीशन। None for the petitioner. Shri M.K. Mishra submits that patta for fishing was granted in 2010 for a period of 10 years and now with passage of time petition is rendered infructuous. Accordingly, petition is dismissed as having been rendered infructuous. 146 and 146.1. Obliged. अरे भाई ये 146 है,
अच्छा, वो पहले ही हो गए थे, वो किसके यहाँ थे उसमें? अच्छा, सॉरी। वन 47 कर दीजिएगा इसमें, सॉरी, नन फॉर द पिटिशनर करके। चलिए। आगे सवैया क्या हो गया ये? मतलब इसमें हाउसिंग बोर्ड का था तो उसको कुछ इंक्रीज कर दिया था किस्तों को, उसके खिलाफ ये आए थे कि ये इंक्रीज नहीं कर सकते। तो खत्म हो गई सर। माइनर देखिएगा, नन फॉर द पिटिशनर श्री रिस्पॉन्ड नंबर 2 and 3 की ओर से हूँ माइनर। जी जी, श्री पटेरिया फॉर रिस्पॉन्ड नंबर 2 and 3 सबमिट्स दैट विद पैसेज ऑफ टाइम दिस पिटीशन इज रेंडर्ड इनफ्रक्चुअस। इसमें तो स्टे था माइनर। आप तो इनफ्रक्चुअस कैसे हो जाएगी? नहीं, इन्फेक्चुअस तो नहीं हुई माइनर। नहीं होगी ना, तो इसको मेरिट पे ही सुनना पड़ेगा। मेरिट पे सुनना। पिटीशन इज ऑलरेडी एडमिटेड फॉर फाइनल हियरिंग, लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग इन पार्ट बी ऑफ द कॉज लिस्ट एज पर इट्स टर्न एंड सीनियरिटी। चलिए नेक्स्ट। बताइए। मतलब नेक्स्ट वीक में लोग सीने की ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हैं। लिखिएगा, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ श्री, आपका शुभ नाम बताइए। अमित तिवारी। अमित तिवारी, लिस्ट दिस केस नेक्स्ट वीक। नंबर मतलब मैटर इज रिलेटेड द अर्बन सीलिंग लैंड। जी, मतलब इसमें फाइनली सुनना है इसको। Yes. Petition is already admitted for final hearing, list in part B of the cause list for final hearing as per its turn and seniority. चलिए। नंबर 50 के बाद नंबर 50 के बाद क्या किस ग्राउंड पर आए हैं? कंपनी कंपनी दुर्घटना का वाहन प्लॉटशिप ड्राइवर चला रहा था। ट्राइब्यूनल ने माना कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं है। पैरा 11 लॉर्डशिप ऑफ द इम्प्यून अवार्ड काइंडली पेज नंबर 15। आप किसके लिए आ रहे हैं? सर वो काउंटर अपील है एनहांसमेंट की, तो उसमें ये कंपनी की अपील भी है। अच्छा, सोम मिश्रा की अपील में क्या ग्राउंड है? मेरे पास कॉपी नहीं है। अरे भाई, आप काउंटर अपील में आ रहे हैं तो आपको ये तो मालूम होगा ना कि पैरा 19 में लॉर्डशिप में काइंडली एक रुक जाइए, पहले एक रुक जाइए जी। मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण एक्सीडेंट हुआ, इसलिए लायबिलिटी नहीं। ऐसा होगा, ऐसा है ना? ऐसे ही आपको पता है मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, उसकी खुद की नेग्लिजेंस मानी है ड्राइवर की। जी, और ड्राइवर ही मृतक है। और ड्राइवर भी डेथ है। ड्राइवर की डेथ हुई। ड्राइवर की डेथ हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी को एक्सोनरेट नहीं किया है। नहीं, अच्छा, चलिए। पैरा 19 बोल रहे हैं। जी सर।
बताइए, आप ही बता दीजिए इसमें कहाँ बनेगा भाई, वो तो मैकेनिकल फॉल्ट है तो लायबिलिटी तो है। लिखिएगा, these appeals are filed by the insurance company and the claimants being aggrieved of the award dated 27/11/2015 passed by learned additional motor accident claims tribunal Multai district Betul in MCC number 58/15। हाँ आइए सोम जी बताइए। Full stop. Case of the insurance company is that to award compensation, recording a finding of negligence is a sine qua non, and since that finding has not been recorded, insurance company should have been exonerated. Full stop. यही है ना आपका ग्राउंड? He was the driver. He was driving that particular track, which met with the accident, and the trial court has given the finding that he was not negligent. हाँ, वो मैकेनिकल फॉल्ट आया है ना उसमें, तो जजमेंट लाए हैं सर। और दीजिएगा। Full stop. It is submitted by Shri Som Mishra that driver himself was driving the vehicle. Since there was, tribunal has recorded a finding that there was no negligence on the part of the driver. Therefore, law laid down by Supreme Court in Oriental Insurance Company Limited versus Meena Varial and others 2007 का 5 SCC 428 will be applicable. Full stop. I am placing reliance on one more judgment, that is OIC versus Premlata Shukla. Reliance is also placed on the judgment of Supreme Court in Oriental Insurance Company Limited versus Premlata Shukla 2000 7 AIR SCW 3591 इक्विवेलेंट साइटेशन 2006 का 2 ACJ 10 नहीं सॉरी इक्विवेलेंट नहीं Equivalent is 2006 volume 2 ACJ 1081 2006 2 ACJ हाँ 1081 1081 पे MP लिखा हुआ है, वो MP का जजमेंट है भाई साहब। To buttress the claim that in absence of any negligence, impugned award could not have been passed against the insurance company, especially when disease himself was driving the offending vehicle. आपकी पॉलिसी कौन सी है? कॉम्प्रिहेंसिव है, थर्ड पार्टी है? कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। हाँ तो 163A में आ सकते थे ये। नहीं है, एक सेकंड देखेंगे ना, तो आप तो क्या कर सकते थे वो तो हमें देखना है जी। अब पॉलिसी जो है कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ कॉम्प्रिहेंसिव। फुल स्टॉप। इट इज एडमिटेड बाय श्री सोम मिश्रा दैट द vehicle in question bearing registration number, एक और रिकॉर्ड है क्या दूसरा? देखिएगा दूसरे केस में लगा होगा। CG 04JA 8147 CG 04JA 8147 was comprehensively insured. Full stop. Thus, once it is admitted that the vehicle was comprehensively insured, then the law laid down in case of Oriental Insurance Company Limited versus Meena Varial will be of no assistance because the ratio of the judgment is that any person in section 147 within bracket 1 another bracket small b of the Motor Vehicle Act does not intend to cover persons other than third parties. Full stop. Third parties in case of a third party insurance. In the present case, policy was admittedly comprehensive policy, and therefore facts of this case are being different from that of Meena Varial will not have any application. Full stop. It has come on record that the offending vehicle in case of Meena Varial was covered under the Act policy. तो उसमें भी comprehensive policy थी. The regional manager was driving that particular vehicle. अच्छा, इसका लिखा in that case come on record that that in that case
regional manager of the company was driving the offending vehicle and he was not treated to be a third party. Full stop. It is the settled principle of law that a driver of the offending vehicle who borrows the vehicle of the company or the owner moves into the shoes of the owner/borrower and cannot be treated as a third party. Whereas in the present case, insurance company has not led any evidence to show that deceased was not an employee, but the owner of the vehicle or the borrower of the vehicle to have moved into the shoes of the owner/borrower, so to apply a ratio of judgment in case of Meena Varial. तो पेड ड्राइवर था ना ये तो इसमें बेसिक कवर है कंपलसरी पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर लिमिटेड लायबिलिटी टू पर्संस. एविडेंस नहीं आई, आईएमटी क्लॉज नहीं आया है पॉलिसी में ही अगर देखेंगे. हाँ तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली है तो इसलिए सब कुछ कवर्ड है, हम लिखा रहे हैं इसीलिए. जी नेक्स्ट पैरा. Similarly, law laid down in case of Premlata Shukla is on the ground that once a part of the document is admitted, then other part of the same cannot be rebutted and whole document is to be read as such. This judgment too has no application to the full stop. It is also held that proof of rashness and negligence on the part of the driver of vehicle is sine qua non for maintaining application under section 166. Full stop. In the present case, fact of the case are, and as has been discussed by learned tribunal, that there was a sudden mechanical failure in the offending in the vehicle driven by the deceased. He tried to apply brakes. There were drag marks to the distance of 25 meters. 26 कदम. 26 कदम steps. पैरा कौन सा था वो? 19. हाँ. It has come on record that to dispute mechanical failure of the vehicle, and in view of such facts, when there was a mechanical failure, then ratio of law laid down in Premlata Shukla will have no application. उसके आगे मैं लिखा दूंगा. आपका एनहेंसमेंट किस ग्राउंड पे मांग रहे हैं? सर ये इसमें 5,000 रुपए. डेट ऑफ एक्सीडेंट क्या है? 2010 में. 14/11/2010. कितनी थी स्किल्ड लेबर की इनकम? 5,000 और 100 रुपया भत्ता. 2010 5/11/2010. ठीक है. के अनुसार से 4,000 प्रोस्पेक्ट से मिलना आपको. बस एज क्या थी मतलब की? 35 साल. है 35 साल. वो भी जोड़ने के बाद कम हो जाएगा. 8,42,000 बनेगा. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जोड़ने के बाद 40%. तो इन्होंने क्या ज्यादा दिला दिया क्या? देख लेंगे इसको. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन अपील फाइल्ड बाय द क्लेमेंट्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इज टू बी एडेड एट द रेट ऑफ 40%. चलिए. हाँ हाँ बिल्कुल कर दिया. फॉर्म मिश्रा जी का नाम डाल दीजिएगा. 10/16 में रेस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ. हाँ हाँ डाल दीजिए. नंबर 68. My lord, the coordinate bench has referred the matter to the larger bench because there is the conflict between two judgments. देखिएगा, it is submitted by Shri Arvind Soni. Arvind Soni. That matter has been referred to a larger bench and therefore awaiting decision of the larger bench, matter be adjourned. This prayer is not opposed by Shri Vivek Baderia, Shri Shobhaditya and Shri Pushpendra Dubey. Accordingly, matter is directed to be listed after reference is answered by the larger bench. कनेक्टेड कर में पिटिशनर नोट से. हाँ ठीक है, दोनों साथ में जाएंगे. मैं सर स्टेटस को. हाँ ठीक है, जो भी है स्टेटस को अगर जिसमें है वो सब कंटिन्यू करिए. सीरियल नंबर 69. State. No, its reply has been filed. Your Lordship,
they have filed the reply, Your Lordship. I am seeking time to file rejoinder. आपका शुभ नाम बताइए. Bhuvnesh Sharma, Your Lordship. Bhuvnesh Sharma prays for and is granted 2 weeks time to file rejoinder to the return filed on behalf of the respondents list after 2 weeks. Number 70, approved Dr. K. This matter is related to time pay scale, Manoj. तो ये यहाँ थोड़ा लगेगा, सर्विस मैटर तो दूसरे रोस्टर में लगेगा. Yes, Manoj. This case has been wrongly listed today. Service matters are to be listed before a bench having roster to hear service matters. List office to examine and list before appropriate bench. Oh, bless. Number 71, Peter Gupta. इसमें स्टेट की रिप्लाई आनी. Let reply of the state be filed within 4 weeks. List thereafter. जय गोविंद जी का नाम डाल लीजिएगा. कुमार पांडे. लॉर्डशिप एनहांसमेंट की अपील है, साथ में 2 कनेक्टेड अपील है. सेम एक्सीडेंट में 3 लोगों की डेथ हुई थी लॉर्डशिप. ठीक है, सामने से कौन आ रहा है? सामने से लॉर्डशिप इसमें इंश्योरेंस कंपनी को एक में सर्ट दिखा रहा है और 2 में हमदस्त नोटिस करवाए थे जो हमने लॉर्डशिप मैडम को कॉपी दी है. ठीक है, आने दीजिए. हम बताइए क्या है, क्या क्या मैटर है, बताइएगा एक एक कर. जी लॉर्डशिप. सर 72 में लॉर्डशिप ये श्रीमती मुन्नी बाई का केस है लॉर्डशिप. किसकी डेथ हुई है इसमें लॉर्डशिप? नेक्स्ट डेट कर दीजिए तो आई विल फाइल दी वकालत नामा. अरे आपका नाम आएगा, आपकी फीस बन जाएगी. इसमें नेक्स्ट डेट क्या करना है? डेथ केस में कितना टाइम लगेगा? सर इसमें मुकुंद सिंह की डेथ हुई है लॉर्डशिप. क्या एज थी? 50 साल का उसकी एज थी सर. किस तारीख का एक्सीडेंट है लॉर्डशिप? ये एक्सीडेंट है 17 का एक्सीडेंट है सर. डेट है 19/7/17. 19/7/17. क्या इनकम? लगभग 1 बजे सर. कितनी इनकम मानी है? इनकम सर हमने 10,000 रुपए अपनी गवाही में बताया था. 5,000 रुपए नोशनल मान के कर दिया सर. जबकि जो ऑनरेबल आपको देख लेते हैं ना कितनी इनकम है, बस इतना सा तो मैटर है. जी सर 6,800 है मेरी सर. बिल्कुल. ये आपको 10 बार मैंने बोला यहाँ कंप्लीट लिस्ट रखो. आप ये कचड़ा यहाँ रखते हो, ये 16 के बाद से आगे बढ़ाया हुआ रखते ही नहीं हो. इतनी बार आपको एक ही चीज बोलूंगा मैं. मुन्नी बाई देखा है. चलिए, ये हो गया मुकुंद सिंह में. और जी सर लॉर्डशिप दूसरा केस है मतलब इसमें रवि वाला सर 45-33 आबले 19 लॉर्डशिप. बाकी सारा सेम है लॉर्डशिप. इसमें डेथ किसकी हुई है सर? रवि में सर. डेथ किसकी हुई है? जी सर रवि में सर इसकी हुई है सर. रवि तो खुद क्लेमेंट है. इसमें सर कृष्णा और योगेंद्र की हुई है जिसको 6 वर्ष की आयु मानी लॉर्डशिप. कृष्णा तो खुद क्लेमेंट है. आप पूरे फैक्ट्स तो बताइए सर. सर इसमें जो है इसमें कृष्णा की डेथ हुई है सर. कृष्णा और योगेंद्र. डेलन सिंह के नहीं ये कृष्णा बाई में डेलन सिंह. नहीं रवि वाले में. रवि में पॉइंट 1 में सर. क्या है इसकी कृष्णा की? सर 6 वर्ष ट्रायल कोर्ट ने मानी है लॉर्डशिप. 10 साल बताई थी. इसमें लॉर्डशिप कुल 2,55,000 रुपए दिए हैं. जबकि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का सर मीना देवी वर्सेस नूनू चंद महतो का केस है सर. SLP नंबर है 5345/2019. और जो साइटेड हुआ है लॉर्डशिप 2023 का एक SCC पेज नंबर 204 में लॉर्डशिप. 2023 का एक जी SCC 204 के 204. इसमें लॉर्डशिप ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने 30,000 रुपए ईयरली मान के टोटल कितना दिलाया? 15 का मल्टीप्लायर लगा के लॉर्डशिप और 50,000 रुपए अन्य व्यय में दिया. ऐसे 5 लाख रुपए दिलाए. 12 साल की एज थी लेकिन सर उसमें कम हो जाएगा. 12 साल और ये 6
लेकिन 15 साल तक सर एक सही 6 साल तक 4,25,000 दिला रहे हैं, आपको 2,55 दिलाया है जी सर की जगह 4,25 हो जाएगा। चलिए सर ठीक है, हो जाएगा। अब तीसरा तीसरा है लॉर्डशिप, तीसरा एमए है सर 45/2023 लॉर्डशिप। हाँ। इसमें जो डेथ हुई है लॉर्डशिप उसमें बैलेंसिंग की हुई है, 40 साल उसकी एज थी सर। हाँ। और 10,000 रुपए हमने इनकम बताई थी, ऑनरेबल कोर्ट लर्निंग ट्रायल कोर्ट ने 5,000 रुपए मानी सर। ठीक है, एक 1/3 घटा के लॉर्डशिप इसको 75,000 ईयरली के हिसाब से ठीक है। दिया, 1/3 घटा के 50,000, 15 का मल्टीप्लायर लगाया सर। हाँ। 6800 वाला नोशनल का। ठीक है, लिखिएगा। These appeals are filed by the claimants being aggrieved of award dated 8/4/2019 passed by Learned Motor Accident Claims Tribunal Jabalpur in claim case number 1185/17 Srimati Krishna Bai, wife of late Delan Singh and others, comma, claim case number 1159/17 Ravi alias Ranveer Singh on account of death of their 6-year-old son Krishna and Munni Bai, wife of late Mukund Singh, for death of Mukund Singh on the ground that Learned Tribunal has awarded inadequate compensation in all the 3 cases. Next pair. It is submitted that as far as appeal filed by Ravi is concerned, son Krishna was 6 years old. Learned Tribunal has awarded only a sum of rupees 2,55,000 calculator दीजिएगा as compensation. Reliance is placed on the judgment of Supreme Court in 2023 का एक SCC 204 and submits that even in Lok Adalat this court is paying compensation of rupees 4,25,000. Full stop. Thus, there is a scope for enhancement of rupees 1,70,000 in case of appeal filed by Ravi. वैल्यूएशन कितना है आपका कोर्ट फीस में? कोर्ट फीस कितनी दी है? लॉर्डशिप इसमें लॉर्डशिप हमने रवि में लॉर्डशिप 1.5 लाख रुपए हमने एनहांसमेंट के लिए लगाया सर। हाँ। और अभी आप 20,000 पे कोर्ट फीस देंगे क्या? अभी दे देंगे दे देंगे, आज दे दे देंगे। दीजिएगा, ठीक है ना? Thus there is scope for enhancement to the tune of rupees 1,70,000. Next, since appeal is valued at rupees 1,50,000, this appeal, though prayer is opposed by Madam का शुभ नाम डाल दीजिएगा, appearing on behalf of the insurance company, but in view of the law laid down by Supreme Court in Meena Itna, the claimants are entitled to a sum of rupees 1,70,000 in addition to the amount awarded by Learned Claims Tribunal. Thus, this additional amount of rupees 1,70,000 be paid to the claimants along with interest at the rate of 6% from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment. Next pair. As far as appeal filed by Munni Bai is concerned, it has come on record that deceased Mukund Singh was 50 years of age. Accident took place on 19/7/2017. Tribunal has considered income of deceased at rupees 5,000 per month, whereas minimum wages for the unskilled laborer were also to the tune of rupees 7,125 per month. Stop. Similarly, in case of Dillan Singh, who was aged about 40 years, Tribunal has considered 5,000 rupees as notional income, whereas minimum wages were to the tune of rupees 7,125 per month. Full stop. In both the cases, one-third deduction is to be made from the notional income of the deceased. Next para. Therefore, in the appeal filed by Munni Bai, when notional income is taken at rupees 7,125 per month or rupees 85,500 per annum, then after deduction of one-third towards the living expenses of the deceased, net dependency comes out to rupees 57,000. Full stop. In case of Munni Bai, since deceased was 50 years of age, therefore 10% is to be added towards the future prospects
And then when multiplier of tribunal ने कितना लगाया है? 13 का लगाया सर। 13 is applied as applied by the tribunal, and total pecuniary compensation will come out to rupees 8,15,100, over and above which claimants are entitled to a sum of rupees 70,000 under the head of non-pecuniary compensation and rupees 80,000 under the head of loss of parental consortium, taking total compensation to 9,65,000 in place of rupees कितना दिलाया है इसमें? सर ये 45 में सर दिलाया है कृष्णाबाई में लॉर्डशिप 15 का मल्टीप्लायर लगाया था कुल 8,20,000 रुपए। मैं मुन्नी बाई का भी पूछ रहा हूँ आपसे, आप कृष्णाबाई बता रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मुन्नी बाई में सर 13 का गुणांक लगाया सर, टोटल 7,20,000 रुपए दिया। और पिक्यूनरी कंपनसेशन नॉन पिक्यूनरी कितना जोड़ा? वो सर दिया है 8,20,000 रुपए दिलाए। 70,000 रुपए टोटल। हाँ तो कितना हो गया टोटल? सर 8,20,000 रुपए हो गया ना। मुन्नी बाई में कुल 7,20,000 दिया है सर, 6,50,000 रुपए सर वो दिए हैं, 70,000 अतिरिक्त दिलाए हैं सर। एक सेकंड, मुन्नी बाई का देखते हैं। पैरा नंबर 19। एक मिनट रुक जाइएगा। पैरा नंबर 19 सर। अब वकील साहब आपके साथ बहुत मुश्किल है सर। उसके नीचे सर ये सर 21 रुक जाइए, आप रुक जाइए। इक्कीस और 22 सर, सॉरी। Against a sum of rupees 7,20,000 awarded by learned claims tribunal. आपकी अपील कितने की है? Plus there will be enhancement to the tune of rupees 2,45,100 which will be admissible in favor of the claimants. कितने की है? सर हमने 1 लाख रुपए की है। और बाकी कोर्ट फीस इसमें 1 लाख रुपए के ऊपर ब्याज दिलवा दीजिएगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द क्लेम पिटीशन, एंड बचे हुए 1,45,100 पे फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस दैट इज फ्रॉम टुडे, उसको पूरा इन्वेस्ट करा दीजिएगा, ठीक है ना। अब सिमिलरली इन केस ऑफ डिलन सिंह, डेथ ऑफ डिलन सिंह, सिंस एज वाज लेस देन, कितनी एज आई है इसमें? डेलन सिंह की 40 वर्ष मानी सर। 40 years. Therefore, 25% is to be added towards the future prospects. And then when multiplier of 15 as applied by the tribunal is applied, total pecuniary compensation will come out to rupees 10,68,750 plus 70,000 under non-pecuniary heads plus 80,000 under loss of love and affection consortium, loss of parental consortium, taking total compensation to rupees 12,18,750 in place of rupees कितना दिलाया है? 8,20,000 कुल। 8,20,000 plus there will be enhancement of 3,98,750. कितने की कोर्ट फीस है? लॉर्डशिप इसमें हमने 2 लाख की पेड करी सर। 2 लाख की कोर्ट फीस अगर पेड है तो उसमें 2 लाख पे 6% दिला दीजिएगा क्लेम, और बाकी 1,98,750 पर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस दैट इज टुडे, और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अवार्ड, और उसको सबको इन्वेस्ट करा दीजिएगा तीनों केस में। इनकम स्कीम में 10-10 साल की अपील सार डिस्पोज का। तीनों मैडम, तीनों केस में असगरी खान मैडम का नाम डाल दीजिएगा। Lordship, I am praying for 2 weeks time to argue this matter because argue counsel is not available today. श्री, आपका शुभ नाम बताइए। देवराज विश्वकर्मा। देवराज विश्वकर्मा। Prays for 2 weeks time to prepare and argue this case. On his request, list this case on 21 दिसंबर 2023।
इसमें 10/3/2022 को स्टेट ने रिप्लाई के लिए समय लिया था, नंबर 3 का रिप्लाई आ गया, 1, 2, 4, 5 का रिप्लाई अवेटेड है। Reply of respondent number 1, 2, 4, 5 is still We awaited. have changed the order of Board of Revenue. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में क्या रिप्लाई की जरूरत है? चलिए मेरिट्स पर बताइए क्या है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर एनेक्चर? P5, page number 24. और ये सर इसमें काइंडली सीधा P2 लॉर्डशिप। एक सेकंड रुक जाइए। क्या बोल रहे हैं? P2 लॉर्डशिप। P2 क्या है? पेज नंबर 20 लॉर्डशिप। क्या है क्या? ये सर प्रतिवेदन है जो अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर महोदय को लिखा था। हाँ। वो है। इसमें हमारी प्रार्थना थी खसरा नंबर 518 के मद नाला के नक्शा सुधार करने बाबत। पेज नंबर 20 लॉर्डशिप में काइंडली से यानी विषयांकित के संबंध में राजस्व निरीक्षक पटवारी द्वारा ग्राम मुल्ताई द्वारा जांच कराई गई तथ्य विवरण निम्नानुसार है। सर ये ठीक है नाले को ठीक कराने सुधार कराने जाने ठीक है। फिर तो सर ये फिर इसको ये कलेक्टर महोदय ने भी पाया कि हाँ ये इनको इसमें विभाग को कोई क्षति नहीं हो रही है। सर नंबर 6 में आप देखेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है मत परिवर्तन। तो सुनेंगे फाइनली सुनेंगे लिखिएगा कंप्लीट लिस्ट दिस केस फॉर फाइनल हियरिंग इन पार्ट बी ऑफ द कॉज लिस्ट एज पर इट्स टर्न एंड सीनियरिटी। चलिए सर रिप्लाई तो जरूरत नहीं है स्टेट की रिप्लाई की। In the meanwhile, records of the revenue courts be produced by the state council. Kindly list this matter next week as we have to file the fresh application. काय की एप्लीकेशन फाइल करनी है आपको? Sir, I am the new joinee. I have not read the file. My senior has told me to pray for Who's your senior? Indu Pandey ma'am. Indu Pandey ma'am. इंदु Pandey. तो उन्होंने आपको फाइल नहीं दी? सर ये फाइल नहीं दी? इंदु पांडे कौन है सर? लिखिएगा आपका शुभ नाम बताइएगा। Ravleen Kaur Chandok. Ravleen Kaur Chandok. I'm the new Miss joinee. Raveen Kaur Chandok submits that her senior Miss Indu Pandey has not given her file. Therefore, she is not in a position to assist the court. Matter be referred to the Bar Council that how a senior can send a junior without file. And explanation of Miss Indu Pandey be called for. On request of Miss Chandok, इनका जो भी नाम है, case is adjourned. List after 4 weeks. चलिए। हाँ ठीक है आपको कुछ नहीं होगा आप बेफिक्र रहिए। समझा दीजिएगा उपाध्याय जी क्या किया है। जैसे सेक्शन 199 ये पढ़ा है आपने मोटर व्हीकल एक्ट का? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ये पढ़िएगा अभी दे रहे हैं आपको मोटर व्हीकल एक्ट दे रहे हैं ये पढ़ के जाइएगा। हाँ भाई मोटर व्हीकल एक्ट नया वाला ये रखा है ये दीजिएगा मैडम को पढ़ाइएगा। अगर माइनर गाड़ी चलाता है तो जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स की होती है। ऐसे ही यहाँ पर अगर बिगर फाइल लिए सीनियर भेजेगा तो जिम्मेदारी सीनियर की है। तो सीनियर बार काउंसिल में जवाब देंगे। ठीक है पढ़ लीजिए 199 पढ़ लीजिए बैठ के किताब लौटा दीजिएगा जाइए। थैंक यू नहीं किताब बैठ के पढ़ना किताब वापस करना। इसमें लास्ट डेट में हमने अपडेट फाइल कर दिया था। मालवाड़ ने पूछा था कि क्या कार्रवाई करें उनके खिलाफ भी जिन्होंने अभी तक उसका इंस्ट्रक्शन नहीं है। अभी इंस्ट्रक्शन नहीं आया कार्रवाई क्या करें। नहीं आए तो बुलवा लेंगे। इंस्ट्रक्शन कौन सी बहुत बड़ी चीज है सर। किसको देना है इंस्ट्रक्शंस आपको? कलेक्टर से। कलेक्टर श्री जितेंद्र श्रीवास्तव सबमिट्स दैट in compliance of order dated 7/11/2023 collector Niwadi has not given any instructions to file compliance report full stop. In view of such fact let collector Niwadi remain personally present because he has failed to comply with the orders dated 7/11/2023 which Shri Srivastava submits that was already communicated to the collector Niwadi on किस तारीख को communicate किया आपने? सर ने रिप्लाई फाइल कर दिया है। अभी तो आपने बोला कि नहीं किया कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आए। नहीं इंस्ट्रक्शन एफआईआर फाइल कर दिया। इसमें मालवाड़ ने पूछा था लास्ट डेट पे कि जो उन्होंने जो इलीगल एक्ट किया है
उन नोटिस दिया था, हमने शोकॉज नोटिस दिया था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? हाँ, फिर क्या कार्रवाई हुई? वो उसको उसको पूछना है। तो नहीं, तो एफिडेविट में क्या लिखा है उन्होंने? फिर एफिडेविट काय के लिए फाइल किया उन्होंने? एफिडेविट फाइल ये किया है कि मिनट ये इसमें मैं बता देता हूँ। एफिडेविट क्यों फाइल किया है? एफिडेविट फाइल कर दिया था मिनट हमने। क्या कहते हुए फाइल कर दिया? कमेटी के मेंबर के खिलाफ सपोज नोटिस के खिलाफ हाँ, कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है? वही उसी का इंस्ट्रक्शन लेना। ऐसा लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा, सबमिट्स दैट on 27/10/2023 Principal Secretary Panchayat and Rural Development Department also Collector Niwadi were directed to file personal affidavit that why inquiry is pending for 2 years and action be not taken against the members of the committee who are entrusted with the work of conducting inquiry. Next para. It is submitted that thereafter time was taken on 7/11/2023. Full stop. Affidavit is filed. On ये तारीख क्या है? एफिडेविट फाइल किया सर हमने 2/11 लॉर्डशिप 2/11 on 2/11/2023, but it is not made out from the affidavit that what action has been taken by the collector/ACS against the delinquent officers. Let specific affidavit be filed within 2 weeks, failing which Collector Niwadi shall remain personally present. List on 4 जनवरी 2024. निवेदन कर रहा हूँ, इसमें जांच ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे ये शायद आइडिया नहीं है। ये जांच होने की 17/1/2022 को ऑलरेडी जांच हो चुकी है। हो चुकी, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दीजिए ना। इनको पेश करना चाहिए था और इसमें आप कर दीजिए। कर देता हूँ, चलिए परमिशन कर दो भैया, आज ही पेश कर देता हूँ। नहीं, अभी नहीं होगी परमिशन, आप कल फाइल करिएगा। चलिए तो 4 जनवरी के बाद कर दें सर, तो बाहर जाएंगे। 4 के बाद कर दें सर, 5 जनवरी कर दीजिए। हमारी प्रेजेंस ठीक है, लिख के दे दीजिएगा, पर्ची पे नाम आ जाएगा। बताइए दीदी। लास्ट डेट ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड। आ गया रिकॉर्ड? फाइल कर दिया हमने। कब कर दिया आपने? मैलोड 8/12/2023 में। देखिएगा फिर कोई रिकॉर्ड आया क्या इस केस में? वहां थोड़ा ना मिलेगा रिकॉर्ड। 8/12 बोल रही है वो। आपको रिकॉर्ड देखना है क्या द्विवेदी जी? रिकॉर्ड आ गया है? इन्होंने दिया है लड़से, दे दिया है। बहस करेंगे कि देखेंगे रिकॉर्ड? अभी लड़से इन्होंने बहुत डॉक्यूमेंट तो दिया नहीं, ये कह रहे थे इंक्वायरी रिपोर्ट देख लें लड़से, कबरी मेमो के साथ इन्होंने फाइल किया है। हाँ बताइए। जांच प्रतिवेदन का पैराग्राफ कल के लिए रख दे तो ठीक है, जो सीनियर आर्ग्यू कर रहे हैं कहीं और। अच्छा ठीक है, चलिए। फिर ओम प्रकाश द्विवेदी फॉर द पिटिशनर, मिस क्या शुभ नाम है आपका? आशी सोनी। आशी सोनी सबमिट्स दैट senior has to argue this matter and senior is not available. On her request, list this case on Friday को रख दीजिएगा। कौन सी तारीख आएगी? 15 दिसंबर 2023, टॉप ऑफ द लिस्ट। पब्लिश में प्रदेश कुमार मिश्रा, श्याम कुमार गुप्ता, Last time also respondent advocate has taken time lordship to argue the matter. आज कोई है नहीं। क्या मैटर क्या है? Lordship, it was a claim petition before the labor court and by way of seeking amendment under order 7 rule 6, the main cause of action of the petition at para number 3 of page 11 of this petition lordship, they sought deleting this para. And by the impugned order, labor court have allowed their application and permitted them to delete this para 3, which is the core cause of action, and the whole cause of action would be changed by this impugned orders. देखिएगा श्री
आपका शुभ नाम बताइए। सुदेश मिश्रा। Sudesh Mishra for the petitioner, none for the respondents. By way of last indulgence, 7 days time is granted to the respondents to appear and argue this matter. List in the week commencing 18 December 2023. Obliged. My lord, we have to file compliance report of order dated 21/11/23 by which we were directed to serve Dasti service, my lord. We are seeking a week's time to file that, my lord. उपाध्याय हरे कृष्ण उपाध्याय प्रेस फॉर एंड इज ग्रांटेड। आपका तो नाम ही नहीं है। My lord, I am appearing along with Mr. प्रॉक्सी काउंसिल है क्या? जी। वकालतनामा फाइल करिए। जी। प्रेस फॉर एंड इज ग्रांटेड 7 days time to make compliance of the earlier order. List on 19 December 2023 peremptorily. This is appealed by the insurance company on the ground that the applicant was injured person. 6 years. Okay. No postmortem report is submitted. No doctor. अभी इसमें नोटिस इशू नहीं हुए क्या? तो ये नोटिस इशू नहीं हुए क्या रिस्पोंडेंट्स को? नोटिस इशू हुए, हमने उसमें एक एप्लीकेशन लगाई है कि सर्विस में भी ट्रीटेड बाय द एडेड मेंबर। बहुत एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ट्रीट नहीं की जाएगी। लेट देयर इज नो रिपोर्ट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिसेस। Appealant counsel is directed to take steps afresh to serve the respondent claimants on payment of PF per registered AD post as well as through the process of the court within 7 days, returnable 4 weeks. फ्रेश PF पब्लिकेशन का ऑर्डर कर दे राजेश। पहले ये तो कर लीजिए, उसके बाद पब्लिकेशन कराएंगे। राजेश रिटर्न इज अवेटिंग। इसमें रिटर्न क्या होता है? सीपीसी में क्या ऑर्डर है? इसमें रिटर्न लगवाएंगे आप? इसमें विच इज द इम्प्यून्ड ऑर्डर? Annexure P3 is the impugned order. पढ़िएगा क्या ऑर्डर है वो? Here in this case, Lords, the respondent filed a suit for declaration of title and permanent injunction, and further an averment was made that he has developed this particular land, and the suit was dismissed, my lord, by way of annexure P1. He preferred an appeal which was partly decreed in his favor. I would just like to take my lords to annexure P2, page number 37, which is the operative part. 37 जी Lords, 37 मतलब annexure page 31 annexure P2, हाँ उसका जो last portion है, हाँ the appeal was partly allowed. His relief for declaration of title was dismissed. हाँ और उसका जो पार्ट अलाउ हुआ वो पैरा 2 है, पेज 37। प्रति अपीलार्थी गण प्रतिवादी गण को निषेधित किया जाता है कि वह बिना वादी फर्म को सूचित राशि दिए अदा किए हुए वादी द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का आज दिनांक से उपयोग नहीं करेगा। नाउ my lords, an execution to this portion has been filed by the respondent, and he says that the plaintiff has to pay 80 rupees per square feet, which is calculated into 10 lakh rupees, and a warrant has been issued against me to recover that. For that, my lords, an application was filed that the decree is not executable because there is no order. Who is appearing for the respondent? My lord, the name of Mr. Sanjay Gupta is appearing. Shri Amit Khatri for the petitioner, none for the respondent. By way of last indulgence, 7 days time is granted to argue this matter. List on 19 December 2023. Lords, I are to continue. I are to continue. Serial number 82.
The appellant has applied under Section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act for permission to sell the house, my lord, wherein the interest of my minor is involved, my lord. जी जी That has been rejected, my lord. रिकॉर्ड आ गया इसमें देखिए हैं हाँ ठीक है case is to be heard finally record is available list for final hearing in part B of the cause list in the week commencing 12 फरवरी 2024 हाँ तो लीजिए ना रिक्वेस्ट केस लीजिए कब करेंगे हाँ हाँ वो लिस्ट आपकी रिक्वेस्ट पर ये रखिए लीजिए Case case number 85. Kumar Yadav. By this petition, petitioner has challenged the order passed by the Tehsildar and SDU, my lord, in which the application filed by the respondent number 3 for the purpose of mutation on the basis of a fake and non-registered will, my lord, the application of the respondent number 3 has been allowed. Petitioner preferred an appeal against the order of Tehsildar, which has been affirmed, my lord. सेकंड अपील लगती है इसमें कमिश्नर के पास में पहली चीज और दूसरी चीज सिविल कोर्ट से जाकर डिक्लेरेशन ले लीजिए कि ये बिल फर्जी है यस इसी आधार पर मैं पेश किया कि फर्जी जिस दिन इन्होंने विल वसीयत बताया है वसीयत करना उस दिन वो जिसने वसीयत किया वो खंडवा में इलाजरत थे उसके भी दस्तावेज हमने पेश कर दिए हैं तहसीलदार के सामने पेश की थी सर ये विल फर्जी है जिस दिन वसीयत करना बता रहे हैं वो इलाजरत थी वो My lord, there is alternative remedy before the Court of Commissioner under Section 44(2) MPLRC. वही तो हमने पहले पूछा था वकील साहब जो हमें बता रहे हैं जाइए अपील लगाइए कमिश्नर के यादव प्रेस फॉर विड्रॉल ऑफ दिस पिटीशन विद लिबर्टी टू फाइल अपील सेकंड अपील बिफोर द कमिश्नर कहाँ के कमिश्नर है ये जबलपुर If appeal is filed within 15 days from today, then Commissioner is directed not to advert to the plea of limitation, but to decide the appeal on its own merit. I bring for written certified copy by way of supplying the second copy of the certified copy of the impugned order passed by the SDO will return to the petitioner to be used for filing of appeal. As well as the copy of the Tehsildar also. तो certified copy तहसीलदार की भी किया जी हाँ दोनों लगा दिए दोनों कर दीजिएगा चलिए ग्रेट सर नंबर 87 संकेत कुमार है जैन The appeal has been filed on the ground of the implant. Date of accident is 5/2/20. 5/2/20. And FIR has been lodged on 12/2/20. And in the FIR, Marg has been also mentioned. And according to Marg, that has been recorded by the uncle of the deceased. And according to this Marg lordship, exhibit FIR में मेंशन है सर वैसे FIR पढ़िएगा चलिए एग्जिबिट P2 जी मैं थाना भेड़ा का पुनरारक्षक के पद पर पदस्थ हूँ आदि इत्यादि घटना के गवाह अशोक विश्वकर्मा के कथन लेख किए गए हैं जो कथन में बताया कि दिनांक 5/2/20 को 8:30 बजे शाम को मैं धुआंधार बस स्टैंड मेन रोड पर खड़ा था तो जितेंद्र बर्मन मोटरसाइकिल चलाकर आए तो मैं जितेंद्र बर्मन की मोटरसाइकिल पर बैठकर घर भटियाघाट जा रहा था जितेंद्र बर्मन जबलपुर जा रहा था जैसे ही धुआंधार मेन रोड साईं मंदिर के पास पहुंचे तो पीछे से एक ओमनी बस 100 का चालक तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक वैन चलाकर लाया और जितेंद्र की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी जिससे मोटरसाइकिल ट्रांसफार्मर के साइड में लगे लोहे के पोल पर टकराने से जितेंद्र मैं जमीन पर गिर गए जितेंद्र बर्मन को चेहरे पर चोट आई और आदित्यादि फिर उसी समय मुनीम खान सनी और राम बर्मन भी आ गए कार का चालक भी देखा था थोड़ी देर बाद कार का चालक अपनी कार लेकर जबलपुर तरफ भाग गया तो कार का नंबर मुनीम खान सनी बर्मन ने स्वयं देखा था जितेंद्र बर्मन को इलाज हेतु पंजी बर्मन मेडिकल कॉलेज जबलपुर लेकर आए सुबह मुझे पता लगा कि जितेंद्र की मृत्यु हुई मर्ग जांच में अपराध स्वयं किया गया टेंशन मर्ग में है मर्ग इंटीमेशन जेल है थाना बेड़ाघाट जबलपुर के सूचना करता पंजीलाल अंकल ऑफ द डिसीज लल्लन बर्मन की ओर से प्राक तिवारी थाना भेड़ाघाट मृतक का नाम जितेंद्र बर्मन पिता 100
पंचवटी भेड़ाघाट जिला जबलपुर। मृत्यु होने का स्थान मेडिकल कॉलेज जबलपुर। थाने पर सूचना प्राप्त होने पर 6/2/20 के 17:21 बजे मृत्यु का कारण मोटरसाइकिल चलाते समय ट्रांसफार्मर से टकराकर मृत्यु होना मर्ग इंटीमेशन ले किया गया है। अधिकारी का नाम स्वयं है। कैफियत में मजदूरी का काम करता है। मर्ग इंटीमेशन कहाँ है सर? जी हमने फाइल किया एनेक्सर A1 अपने अपील मेमो के साथ में। अपील मेमो से देखते हैं ना A1। अगले दिन ही तो दे दी सूचना। हाँ, अगले दिन ये खबर दी है कि मेरा भतीजा मोटरसाइकिल रात्रि में 8 बजे घर में अशोक के साथ आ रहा था। मोटरसाइकिल जितेंद्र वर्मा स्वयं चला रहा था तो रास्ते में धुआंधार साईं मंदिर के सामने पहुंचा तो ट्रांसफार्मर में जाकर टकरा गया, जिसको उठाकर मेडिकल कॉलेज जबलपुर लाए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पीएम की जो एप्लीकेशन है उसमें भी यही आया है कि स्वयं की हम पंचों की राय है कि मृतक जितेंद्र बर्मन जगदीश्वरन साकेन पंचवटी भेड़ाघाट की मृत्यु मोटरसाइकिल स्वयं के द्वारा चलाते समय ट्रांसफार्मर में टकराने से मृत्यु होना प्रतीत होती है। यस, ये गाड़ी कहाँ से आ गई? आई विटनेस ने ही आई विटनेस है, इसीलिए तो एग्जामिन। अरे भैया वो तो ठीक है, आई विटनेस ने मर्ग इंटीमेशन लिखाई है ना। हाँ, मर्ग इंटीमेशन किसने लिखाई है? A1 अंकल ऑफ दी डिसीज। हाँ वो, और उसको आई विटनेस से बताया। पंजीलाल खुद आई विटनेस है। नहीं, पंजीलाल आई विटनेस अशोक वर्मा ने। अशोक विश्वकर्मा, सॉरी अशोक विश्वकर्मा। हाँ, अशोक विश्वकर्मा की एविडेंस पढ़े। पैरा 6 देख ले सर, उसमें क्लियर एविडेंस का। जी हाँ, अशोक विश्वकर्मा। पुलिस मेरे पास मेडिकल कॉलेज में आई थी। यह गलत है कि पुलिस जब दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज में आई थी तो मैंने पुलिस को कार से मारने वाली बात नहीं बताई थी। यह गलत है कि कार वाला मेरी पहचान का व्यक्ति है। मैं पंजीलाल को जानता हूं, पंजीलाल मुझसे मिले थे, मैंने पंजीलाल को घटना बताई थी, तब पंजीलाल ने जाकर रिपोर्ट की थी। मैं कक्षा इतने यह सही है कि मैंने प्रकरण जो प्रथम सूचना आदि प्रस्तुत किए सब पढ़ लिए थे। यह सही है कि जैसी घटना हुई थी वैसी मैंने पंजीलाल को बताई थी, वैसी ही रिपोर्ट पंजीलाल ने बाद में लिख कराई थी। तो जो मर्ग पंजीलाल ने लिख कराया उसके हिसाब से घटना दूसरी है, फिर FIR में चेंज कर दी और ये गाड़ी इन्वॉल्व कर दी। पंजीलाल भी एग्जामिन हुए कोर्ट में? पंजीलाल नहीं, मोहम्मद खान है एक अशोक विश्वकर्मा। अशोक विश्वकर्मा इज आई विटनेस। अशोक और दूसरे कौन है? मोइन खान। इनका पढ़े। मैं पंचवटी भेड़ाघाट में रहता हूँ। मेरी प्रसाद। ठीक है जी। कितना बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन किया मोइन खान साहब का। छह नहीं वकील साहब इसमें। पैरा 4 देख लें। अब ये जो कहना चाहिए कि मृतक को हाथ का पहचान होने के कारण मैंने उनके परिजनों के अनुसार बयान थाने में लिख करा थे। स्वतः का जैसा मैंने देखा था वैसा ही पुलिस को बताया। स्वतः कहा था, वो इतना थोड़ा ना समझता है। गवाह वकील साहब के चक्कर में आ जाते हैं वो तो। देखिएगा, दिस अपील इज फाइल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी बीइंग एग्रीव्ड ऑफ award dated 24/8/2022 asked by Learned 7th Motor Accident Claims Tribunal Jabalpur in MACC number 1119/2020 on the ground of false implication.
Next para. Shri Rakesh Jain submits that he has filed copy of Murg intimation as was given by one Panji Lal, son of Lalla Burman, to the police station on 6/2/2020, wherein it is mentioned, specifically mentioned, that deceased was traveling on motorcycle MP 20 MS 7006 and about 8 p.m. accident took place on account of his getting dashed against a transformer. Full stop. It is submitted that in view of this Murg intimation, it is evident that for an accident which took place on 5/2/2020, FIR was lodged on 12/2/2020, falsely implicating Maruti vehicle bearing registration number MP04 BC 0879. 0879. Full stop. Reading from evidence of Ashok Vishwakarma, it is submitted that this evidence is not creditable. Ashok Vishwakarma has admitted that he had given intimation about the incident to Panji Lal, including the number of the offending vehicle, and Panji Lal recorded the intimation as it is. Full stop. However, next, Shri Satish Chaurasia supports impugned award. Next pair. However, the fact of the matter is that there is another eyewitness, Moin Khan. His evidence has remained unrebutted. He admits that he had seen the accident taking place while returning from Jabalpur, where he had gone to purchase material. Accident took place at 8 p.m. When he had reached near Sai Mandir, he had seen that a motorcycle riding with two persons was dashed by Maruti van bearing number MP04 BC 0879, as a result of which accident took place. There is no substantive cross-examination to dispute or disbelieve this witness. Therefore, even if there are certain omissions in the evidence of Ashok Vishwakarma, another eyewitness, but since they have been covered by eyewitness Moin Khan, it cannot be said to be a case of false implication. In fact, insurance company should have examined Panji Lal or the ASI of the IO of the case to rebut the finding of accident taking place with the vehicle insured with the present appellant. But for their failure to lead such evidence, no indulgence can be shown. Appeal fails and is dismissed. Oblige. भारत सीरियल नंबर 99.1 में नोटिस नहीं हुआ है. 99.1 में इशू नोटिस कर दीजिएगा. On payment of PF within 7 days, returnable 4 weeks. तो 99 में interim relief भी please continue. 99 में अगर interim relief है तो continue. My lord, I am appearing on behalf of the respondent number 2, that is mother-in-law of the petitioner, my lord, and this is the matter of maintenance and welfare of the Parents and Senior Citizen Act 2007, my lord, and I have filed an order of honorable double bench. Notice accept कर लीजिए ये 99.1 में. 99.1 में you accept notice. 99.1 में इनका आपका शुभ नाम बताइए. आशीष विश्वकर्मा. आशीष विश्वकर्मा accepts notice. Let copy of the petition be supplied to him. Let reply be filed within 7 days. List on 22 दिसंबर 2023. चलिए. रिप्लाई दोनों में इसमें भी जाएगा. दे देंगे 22 दिसंबर को तो देंगे. चलिए. 7 दिन में रिप्लाई फाइल कर दीजिए वकील साहब. हाँ. In this matter, Your Lordship, today we have filed the affidavit of Assistant Commissioner Tribal Welfare Department. So it's a detailed affidavit, Your Lordship. Let it be scanned and may kindly be taken day after tomorrow. Vinayak Prasad Shah for the petitioner.
Shri Amish Sharma submits that a detailed affidavit is filed on behalf of the Assistant Labour Commissioner. No. Assistant Commissioner Tribal Welfare Assistant Department. Commissioner Tribal Welfare Department. District Dindori. District Dindori. Let affidavit be scanned. List this matter next week. Chaliye. Your Lords. 106. Well, this can be finally disposed of day after tomorrow. Top the list करेंगे. क्या फाइनली डिस्पोज ऑफ करना है बताइए ना. किसी को पेटिशन ही हाँ तो बताइए, अभी बताइए. अभी बता रहे हैं. हाँ 12 मिनट तो हैं अभी. चलिए बात हैं कर दे. जी इसमें शॉर्ट पॉइंट इज दिस मैटर जी that this one Chote Lal, जी he applied to the collector to sell the land जी and collector granted permission of 165 जी on 9/3/2005. जी Then a sale deed was suited in favor of petition number 1 on 23/3/2005 जी in respect of the lands as given in the sale deed. जी. That is document P1 page 24 to 27. अब क्या उस परमिशन को विड्रॉ कर लिया क्या इन्होंने? नहीं परमिशन ग्रांट कर दी कलेक्टर ने छोटे लाल को. हाँ उसने एक परमिशन ग्रांट करने के बाद बेच दी नंबर 1 को. हाँ फिर एक भूरी भाई उसके बाद भूरी कोल हाँ फिर छोटे लाल कोल ने दोबारा परमिशन के लिए अप्लाई करा. वो भी ग्रांट हो गई हाँ और भूरी कोल के साथ तो वो परमिशन भी ग्रांट हो गई. फिर सेल हो गई प्रॉपर्टी. पिटीशन नंबर चल इसको सुनेंगे. सेल डीड वगैरह देखना पड़ेगी. लिखिएगा. वही मैंने आपसे- बी हर्ड फाइनली लिस्ट फॉर फाइनल. नहीं सेल डीड का डिस्प्यूट नहीं है सर. हाँ समझ गया समझ गया. सेल डीड का डिस्प्यूट ही नहीं है. हाँ हाँ किस चीज का डिस्प्यूट है? डिस्प्यूट ये सर सिर्फ उसके बाद हुआ क्या है कि सडनली वन सरस्वती कोल करके कोई लेडी है. और हाउ शी इज कनेक्टेड विद छोटे लाल कोल और भूरी कोल उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कुछ नहीं है. कोई भी लेडी आके खड़ी हो गई उसके एक अपील फाइल कर दी उन्होंने एसडीओ पे. अब इस व्हाट कनेक्शन दिस लेडी हैज विद छोटे लाल कोल और भूरी कोल. देयर इज नथिंग देयर. देखिए आप हैं छोटे उसके लिए. Lords, I am appearing on behalf of respondent number 327, Lordship. भूरी दे आर द मेंबर्स. नहीं वो देखिए अपील फाइल होती है डॉटर ऑफ रमेश कोल और फैमिली मेंबर्स जो हैं यही रमेश कोल के ये रिस्पोंडेंट्स हैं एसडीओ के. पर हमें पार्टी नहीं बनाया है. ठीक है देखते हैं. आपका देखते हैं. हाँ रीडिंग्स आर कंप्लीट. केस इज टू बी हर्ड फाइनली. लिस्ट in January 2024. IR to continue. Any week commencing, Lordship, because there is a step for application for vacating of stay. 15 जनवरी 2024. My lord, the respondent made the request, my lord. बताइए क्या Matter, my lord. Order of the matter pertaining to mutation, my lord. My lord, order passed by the Tehsildar is challenged by the respondent, my lord, before the SDO, my lord. SDO dismissed the appeal, my lord, on the ground of limitation, my lord. Against which, my lord, the respondent preferred the revision before the collector, my lord. Collector, my lord, passed the order and remand back the matter before the SDO, my lord. होती है एसडीओ के ऑर्डर की रिवीजन की कमिश्नर के सामने होगी. My lord, if the स्टेशन में जब सेकंड अपील प्रोवाइडेड है, my lord, if the application dismissed on the ground of, my lord, limitation, then, my lord, revision will lie before the additional collector, my lord. That order has been, my lord, collector passed the order, my lord. Against which, my lord, the petitioner, my lord, preferred the revision before the commissioner, my lord, which is, my lord, is not maintainable, my lord. Therefore, my lord, in same is allowed by default, my lord, by the commissioner. Against which the MP preferred by the respondent, my lord. Wide annexure P7, my lord, this honorable court, my lord, on the ground that the second appeal would not lie against the order of the revision, my lord. Therefore, my lord, petition has been allowed, my lord, and
upheld that the order passed by the additional collector will go Yes, on, my lord. correct, ji. My lord. My limited prayer is that, my lord, because the petitioner choose the wrong forum, my lord, instead to file, my lord, a miscellaneous petition before this honorable court against the order of the collector, my lord. हम तो ये कह देते हैं कि ये जो एडिशनल कलेक्टर के ऑर्डर है इसके कंप्लायंस में फाइनल डिसीजन ले अथॉरिटी जो है तहसीलदार को है ना ये सब डिविजनल ऑफिसर My lord, sub-divisional officer. तेंदुखेड़ा टू डिसाइड द अपील विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड लिमिटेशन का दे देते हैं बस लिखिएगा My lord. with the consent of the parties this petition can be disposed of with the direction to the sub-divisional officer Tendukheda to decide appeal in terms of the order of the additional collector Damoh dated 28 May 2020 within a period of 30 days after giving opportunity of hearing to the concerned parties. My lord, This court has not expressed any opinion on the merits of the case. My lord. Can be. Number 119. मालूम लास्ट हियरिंग में ऑनरेबल कोर्ट ने रिकॉर्ड कॉल किया था मालूम इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कहा था कि सिनॉप्सिस बनाकर लाइए ताकि रिकॉर्ड भी नहीं आया अभी मालूम रिकॉर्ड नहीं आया है फिर से बोलते हैं ऑफिस को श्री अनूप नायर फॉर द अपीलेंट श्री सूरज वर्मा साहब है ना मालूम फॉर द रिस्पोंडेंट record of the lower court is not available. Let record be called for positively within 15 days. List in the month of January 2024. IR to continue, Lordship. IR if any to continue. Much obliged. Number 121. Lordship, this appeal is filed, Lordship, on the ground that the vehicle has been possibly involved after inordinate delay of almost 6 months, Lordship. Evidence क्या है? Lordship, here, Lordship, the accident, Lordship, that is taken place in the night hours of between 7/3/2011 and 8/3/2011. 7/3/2011 to 8/3/2011. A dead body was found lying, Lordship, on the side of the road. That FIR is exhibited as Exhibit P2, Lordship. It is lodged by one Ram Sumaran Tiwari, Lordship. Against the unknown vehicle, Lordship. And Lordship, thereafter, Lordship, the body remained unidentified till 25/3/2011, Lordship. किसने देखी थी ये एक्सीडेंट? एक्सीडेंट, Lordship, एक राजेश विश्वकर्मा को देखना बताया. तो इनके जो मृतक के भतीजे हैं, नेफ्यू, Lordship, वो बताते हैं कि एक दिन जब वो मई के महीने में गांव गए थे, केकर गांव गए थे, तो वहां गुटखा लेने गए और ये गुटखे वाले दुकान पे मिल गए होंगे ये जी, गुटखे की दुकान पे राजेश विश्वकर्मा को मिले, Lordship, गुटखे वाले, और उन्होंने बताया कि मैंने एक घटना देखी थी. और उसके बाद 12/5 का ये बता रहे हैं, Lordship, और उसके बाद फिर पुलिस को एफिडेविट दे रहे हैं 9वें महीने में, Lordship, कि मुझे ऐसा पता चला. कौन है ये इनके स्टार विटनेस? राजेश विश्वकर्मा, Lordship. पढ़े इनकी एविडेंस? जी, Lordship. कितना फर्जी केस लगवाएंगे परिहार साहब? कितने फर्जी क्लेम करवाएंगे? लॉर्डशिप, FIR में आया है कि किसी वाहन ने उसको हिट किया है. FIR में आया है, मतलब क्या कि किसी वाहन ने जो है ना, नहीं तो किसी वाहन का वो वाहन 9 महीने बाद 6 महीने बाद कैसे पकड़ा जाएगा? आई विटनेस ने आपको बता दिया मई के महीने में उसने घटना देखी थी. जी जी. फिर आप मई के महीने से सितंबर तक क्या करते रहे? फिर लॉर्डशिप, इनको जो है ना 15 दिन बाद पेपर में छपा कि एक जो है ना अननोन बॉडी पाई गई, तो एक हॉस्पिटल. अरे उसको छोड़ दीजिए, उसको वो सब माफ कर दिया. अननोन बॉडी पाई गई, वो आपको जब मिली तब आपने उसकी अंत्येष्टि कर दी, वो सब ठीक है. ये तो लेकिन जब राजेश विश्वकर्मा जी मिले उस आदमी से मई में, उसके पहले तो अंतिम संस्कार हो गया था ना? जी जी है जी. पैरा 3 में आया लॉर्डशिप. पैरा 3 इनके एफिडेविट था. पैरा 9 में, मतलब इम्प्यूग्न ऑर्डर में है. इम्प्यूग्न ऑर्डर छोड़िए, पहले एविडेंस पढ़ाइए इनकी. जी जी. चलो पढ़ो भाई, इनकी एविडेंस पढ़ो. जी लॉर्डशिप, चीफ से पूरा पढ़ूंगा. नहीं, जहाँ से आपको पढ़ना है. जी लॉर्डशिप, इसमें लॉर्डशिप पैराग्राफ नंबर 2 है. यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि थोड़ी देर रुकने के बाद
घटना कारित करने के बाद मैंने उक्त ट्रक का पीछा किया। उक्त ट्रक टोल बैरियर के उस पार मुझे मिला, किंतु उसकी रफ्तार काफी तेज थी। वह उक्त ट्रक मैहर की ओर भाग गया। दिनांक 2/5/11 को मेरे गांव के मनीष तिवारी मेरी केमार स्थित किराना की दुकान में गुटखा खरीदने आए। जब मैंने उनसे सिर के बाल मुड़वाने का कारण पूछा, तब मनीष तिवारी ने मुझे अपने मौसा शिव कुमार तिवारी के दुर्घटना में मृत्यु होने की बात दिनांक 8/3/11 को होनी बताई। तब मेरे द्वारा मनीष तिवारी को उक्त घटना के संबंध में समस्त तथ्य बताए गए। जब मनीष तिवारी द्वारा घटना का संपूर्ण ब्यौरा यहाँ पर डेड बॉडी कब मिली थी? डेड बॉडी कब मिली थी डेड बॉडी? डेड बॉडी लॉर्डशिप जो इन्होंने आइडेंटिफाई करी 25 मार्च 2011 को। 25 मार्च 2011 को? जी लॉर्ड। ठीक है, एक सेकंड। तो अंतिम संस्कार भी 26/3 को हो गया होगा? जी है जी जी 13 दिन भी मान लें। जी जी और ये इनसे मिल रहे हैं मई में। जी वो दूसरे गांव के हैं, यहाँ गए हुए थे। ठीक, चलिए। तो इन्होंने जो है ये राजेश विश्वकर्मा जी ने पुलिस को घटना की सूचना क्यों नहीं दी? उन्होंने देख लिया था तो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट लॉर्डशिप पैराग्राफ नंबर 5 में किया है क्रॉस के इन्होंने। जी क्या कहा? जो जी यह कहना गलत है कि ट्रक क्रमांक यूपी 0535 से कोई दुर्घटना नहीं हुई। मैं घटना स्थल पर 10 मिनट रुका था और ट्रक घटना स्थल पर नहीं रुका था। मृतक व्यक्ति को मैंने देखा था। मैं मृतक व्यक्ति को नहीं पहचानता था। मृतक खाकी कपड़ा पहना था। मैंने ट्रक का कोई पीछा नहीं किया था। वहाँ कह रहे हैं लॉर्डशिप पीछा किया था। पूरा फर्जी जी जी कोई पीछा नहीं किया था। घटना के फाइल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जब ये एग्जिबिट P2 देखने लॉर्डशिप FIR यहाँ पे P2 दिखाइएगा। न्यायाधीश लॉर्डशिप आप पढ़िएगा। टांकित फरियादिया उपस्थित थाना आकर जवानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं ग्राम चौराहटा में रहता हूँ। रमकुई नेशनल हाईवे नंबर 7 रोड चाय पान की दुकान है। दिनांक 7/3/2011 के रात 11 बजे खाना का खाकर सो गया। सुबह 5:30 बजे पिलकान पुलिया रमकुई की ओर दिशा मैदान के लिए गया था। तब दिशा रोड के किनारे पट्टी पर एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष की रही होगी, खाकी जैसे रंग का पैंट शर्ट पहने था। इसमें कहाँ लिखा है कि इसने कोई गाड़ी देखी? 2 लाइन से लाट मांगे। देखिए, काले रंग का कपड़े पास पड़ा हुआ था, शव पड़ा हुआ था, सिर चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया था, काफी खून बह रहा था। मैंने आसपास आने जाने वाले उस व्यक्ति व पहचान करने का प्रयास किया, किंतु पहचान नहीं कर पाया। उस व्यक्ति की मैं तो किसी वाहन के चालक के द्वारा वाहन को किसी तेज रफ्तार वो वाहन कहाँ से आ गया? वो लॉर्डशिप जब वो वहाँ गए थे, मतलब तो उसने दुकान वाले ने बताया। मतलब अरे बहुत अच्छा किया। ऐसे दुकान वाले तो सभी भले लोग हैं। रिपोर्ट क्यों नहीं की उन्होंने? लॉर्डशिप इनका जो AW आई एम अलाउइंग दिस अपील। इनका स्टेटमेंट हुआ ऑफिसर के लॉर्डशिप। 2 लाइन लॉर्डशिप। उनके ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर थोड़ा ना साइट पर था। आपका ये राजेश विश्वकर्मा जो है, ही इज अ डाउटफुल विटनेस। इसी ग्राउंड पर ये अपील अलाउ होगी। This appeal is filed by the insurance company being aggrieved of the award dated 24/3/2022 passed by 111th Additional Motor Accident Claims Tribunal REWA in claim case number 5000017/2012 on the ground that accident took place in the intervening night of 7/3/2011 and 8/3/2011. FIR was recorded that an unknown body was found when the informant had gone for answering the call of nature. Full stop. Thereafter, publication was made in the newspaper. Dead body, which was found lying by the side of the road, was recovered, and then last rites etc. took place on 26/3 बोला था ना, 25/3/2011. 25/3 डेट बताई थी ना? 25/3 को आइडेंटिफाई किया था। On was identified on 25/3 and last rites were performed on 26/3/2011. Next para. It is submitted that story of the claimants is full of improbabilities. Full stop. They have
planted one witness, Rajesh Vishwakarma, to suggest that when Manish Tiwari had visited his village on 2/5/2011 to purchase gutka, etc., then he had asked the reason for clean shave of his head, full stop. Then he had informed that his Mausa Shiv Kumar Tiwari died in an accident on 8/3/2011. Then Rajesh Vishwakarma had given vivid description of the accident as he claimed himself to be an eyewitness. Next para. The Lamba submits that there is material contradiction in the evidence of this witness. Firstly, he had not reported the matter to the police authorities. Secondly, even if that is condoned, then he has deposed that he had followed driver of the truck UP 72T 0535 for quite a distance and had noted number of the truck, full stop. In para 2, he has categorically deposed that he had followed the truck and met the truck across the toll barrier, full stop. It is pointed out that no evidence from the toll barrier was produced to show that said truck had actually crossed toll barrier on 8/3/2011 and the deponent Rajesh Vishwakarma too had crossed the toll barrier while following the truck. In as much as in para 5 of his cross-examination, this witness admits that he had stayed at the place of the incident for 10 minutes. He had not followed the truck, full stop. Thus, these contradictions are ample. So also delay in and also looking to the fact that no statement was given by this witness to the police authorities. लॉर्डशिप स्टेटमेंट लॉर्डशिप बहुत आखिरी की स्टेज में दी नहीं sorry, and also looking to the fact that though Manish Tiwari had met this witness on 2/5/2011, but intimation to the police was given by Manish Tiwari on किस तारीख को दी है? ये लॉर्डशिप एग्जिबिट D7 से लेके D8 एंड D9 के शपथ पत्र हैं लॉर्डशिप जो पुलिस को दिए हैं, ये 12 नो के हैं लॉर्डशिप। D7, D8 एंड D9 लॉर्डशिप। नहीं भाई, D7 सॉरी। But affidavits in regard to the accident taking place were given to the police authorities as contained in Exhibit D7, which is affidavit of Vineet Tiwari, son of Ganga Prasad Tiwari. Then of Rajesh Vishwakarma as Exhibit D8, who claims himself to be an eyewitness. And then of Santlal Dahayat as contained in Exhibit P9. But there is no affidavit of Manish Tiwari. Manish Tiwari मिला था ना उनको तो। मनीष तिवारी के साथ विनीत तिवारी मिला था। ऐसा कहाँ लिखा है इसमें? उसने अपनी एविडेंस में ये नहीं कहा कि विनीत तिवारी भी आया था। No affidavit of Manish Tiwari, who according to Shri Rajesh Vishwakarma had met him on 2/5/2011. Full stop. Therefore, when there is no mention of presence of Vineet Tiwari along with Manish Tiwari on 2/5/2011 in the examination in chief affidavit of Rajesh Vishwakarma, then presence of Vineet Tiwari cannot be accepted. Full stop. Thus, non-production of Manish Tiwari, who had gathered information from Rajesh Vishwakarma, is fatal to the case of the claimants. Full stop. It is apparently a case of false accusation. Full stop. It's a case of false implant of the vehicle. Evidence of so-called eyewitness Rajesh Vishwakarma does not inspire any confidence.
Impugned award has been passed on the basis of conjectures and surmises. Impugned award is set aside, appeal is allowed and disposed of. My lord, may I request, my lord, item number 91, my lord. आज नंबर नहीं आ पाया तो tomorrow रख लो, my lord. Tomorrow को आपको क्या लगता है हमारे पास कोई और काम नहीं है? आपने मेंशन भी नहीं किया सुबह. ठीक है ना? चलिए. May I make a request for item number 94? Only link करना है. रास्ता जी एक भी साथ